Como? Ừ. ओहो, टाइम हो गया। दे, दे, ए, एती एती। एती। Hey. Hmm. Oh. Tại tại.
नहीं है। Fine. बोल जाओ ना। I've been regularly organizing such meetings on both sides, like on field side or operation side, to understand overall situation of the particular region or district or state, and some serious issues such as emerging issues like we have seen Karja Mukti Abhiyan and other things in particular region, district pockets, etc. So we have been organizing such meetings to understand overall current situation. If serious thing is coming up, or if serious thing is already existing, we are planning to have some action plan to counter those issues in particular districts or region. So for that matter, we are organizing today's this interaction to understand overall situation. Along with me, other colleagues from Sadhan who have also joined. Mr. Vinit Joseph, he has also joined from Sadhan. Mr. Devinder Samant, who is also part of Sadhan TV, has also joined. Ms. Sangeeta Naik, who is a senior colleague from Sadhansi has also joined. So I think it will not take much time. Let me go through one PPT presentation which we have, where we will be discussing regarding today's meeting agenda point. I hope my screen is visible. Yes, yes. Yes, sir. Visible. Yeah. So agenda of today's meeting basically will go through. Will take you through. So many other colleagues are joining now. So we'll take you through some snapshot of the industry vis-a-vis state and region overview.
Then we will have an open discussion where you can share your issues with regard to operational and non-operational both, and we will have a like open discussion also on operational and other issues which you are facing currently, or you are seeing any emerging issues in your particular region or across state. And at the end of this meeting, we will conclude with some action plan if required with concerned authority, and then we will share the meeting of minutes, and we'll work closely with you to support you in the region and as well as state. So, so this is a snapshot of industry. The industry size was stable earlier as on March 2026, and despite a typical slower dispersal as we have seen in quarter 1, while the trend of also improvement in terms of credit quality and other things as well. So the portfolio had not much grown, as you can see on quarter from March to June. We have seen 0.60 like improvement in terms of overall GLP of the industry, where we are also seeing active loans and live customer the declining mode both on quarter and year basis. The disbursement amount has been grown as per the data of year data compared to last year, June 2025 over June 2026. PAR have been also improving, as you can see, the PAR 30, PAR 90, and other buckets of PAR have been also slowly like declining. So this is with regard to industry snapshot as of June 2026. Uh, this is a chart of like legal form wise industry, overall industry of the country. And still, as we all know, NBFC, MFI have been growing like compared to other legal form, like followed by banks, small finance bank, NBFCs, and other categories of microfinance institution. So as you can see, like quarter-on-quarter growth or year-on-year growth, NBFC MFI still showing as a green shoot. Some pocket of quarter GLP have been growing have been supporting and growing by NBFCs, followed by small finance bank. And total, we are also seeing like quarter the growth has been going on year, only NBFC MFI like from 1%, 1.3% to 5.2% on year on year basis, and NBFC MFI still remain stable in terms of quality portfolio, followed by banks and BFC, followed by banks, SFBs, NBFC, and other MFIs. So this is a legal form wise like lender post distribution of 1 year data. So this is the March data. In next slide, we will see and discuss other recent data. क्योंकि हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो जून का क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, उससे कंपेयर कर सके. तो राजस्थान एज ऑन March 2026 was closing at 30,000 crore, 30 and 13,706 crore, with loan account of almost 42 lakh, and the number of lenders were close to 60. It is mentioned like 58. PAR DPD, which is close to PAR 30 DPD is close to 3%, while 60 and 90 have been like in a decreasing mode. But still, we are seeing, as per industry, PAR 180 DPD is close to 17-18%, which is not good for the sector. Slowly, it is coming down. We'll see in next slide. So this is a slide of loan accounts.
this is a slide of loan accounts and loan outstanding. So these are the district of Jodhpur region. We call as a Marwar region. सो आप देख सकते हैं ओवरऑल राजस्थान का जो हमारा पिछले स्लाइड में दिख रहा था 42 लाख के आसपास हमारा लोन अकाउंट दिख रहा था, वो आपका इम्प्रूव होके 43 लाख 43.3 टू लाख हो चुका है, और 200 करोड़ का भी हमारा लोन आउटस्टैंडिंग इम्प्रूव हुआ है. इन प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी लाइक 13,706 करोड़ था, जो कि 13,915 करोड़ हुआ. इट मीन्स some improvement have been coming up in the picture, and loan, and also this number of loan accounts, number of lenders who were disbursed during April to June, which is also close to March 2026 number, which is 57%. Yeah. So this is a par by bucket. You can see जैसे हमने मार्च का देखा था जो कि 2.2 par 30 DPD ऑफ राजस्थान वेयर 2.82, सो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. इट इज नाउ एज ऑफ जून 2026 2.36. Comparatively par 60 and 90 DPD is also in a declining mode, but still we are seeing 180 plus 180 and 180 plus numbers are close to 20%, which is a concern for the industry, which was like written off by all institution or regulated entities. Jodhpur part 30 DPD, Jodhpur part 30 DPD and Siroi we are seeing it is more than 3%, which is more than 3%, which is concerning alarm of various risk like multiple lending or over indebtedness, etc., etc. So we will discuss this in detail. So this is a slide of various par delinquency. Yeah. So over the period of time, Sadhan has been supporting members across state where field issues emerges, and we immediately countered that issue, whether it's loan waiver or whether it's local political issue, which we had seen in recent past. We are conducting some financial literacy program in some pockets of risk prone districts, where we are organizing such event with support of member MFIs. On a regular basis, we are sensitizing like local stakeholder, and also giving representation to the district collector and other stakeholder like LDM, DDMs, and also including state government, Reserve Bank of India, regional office, etc. We are also recently conducted lead district manager officers virtual training program on microfinance. We had seen in past like these lead bank officer, they have a limited information related to recent changes in the sector, and also something is happening. They are calling such meetings to where they are inviting MFIs and discussing various things which is related to operational activities and other things. So which we had conducted with support of Bank of Baroda, where more than 55 across all the bankers who are supporting all the district of Rajasthan. We sensitize them on microfinance, recent development, guardrail, and everything. On a regular basis, we are also conducting such a program like code of conduct, responsible lending, etc., with MFI support. So last few months, we had conducted more than we had conducted two programs where more than 250 MFI official have been sensitized on industry code of conduct part and responsible lending. We also organize, as earlier also I shared, like we are also organizing such members meeting and sharing some action plan, working with members, sharing minutes of meeting, etc., which we are doing it. State civil services, RS officers training, IS officers training, we are doing it. We had one batch where we sensitized them on microfinance. Close to 300 officials were trained. We are now planning to have another batch of state civil services. Very soon we will conduct this such program.
Apart from this, like we are working and visiting couple of stress district or risky district of the state, where we are meeting customer branch team to understand local issues and supporting them in a different manner. We also visiting like MFI's regional offices, head office to work closely with them and supporting them. We are also recently we had given a representation to state government, finance department, secretary level, and also government of India, Ministry of Finance, Reserve Bank, NABARD, and other SLBC and other forums regarding microfinance update and development status. As you all know, Sadhan have been also like working to train like MFI official. So we launched one program with support of Indian Institute of Banking and Finance, and which is available for MFI professional who wants to join. It's a virtual training certification program. हर एक क्वार्टर के सेकेंड और फोर्थ वीक में होता है। तो आपके बहुत सारे हमारे साथी इस कार्यक्रम का लाभ ले चुके हैं और कुछ लेना चाहते हैं, तो विल encourage all MFI official to take this opportunity for this IIBA program. Policy related work which we are doing regularly, where we are supporting many things, including credit guarantee scheme fund, which was announced earlier, and for the sector as a 20,000 crore, where all the banks they are supporting NBFC, MFIs, and MFIs under that guarantee scheme. Apart from this, we are also supporting members with data analytics reports. We have been conducting such webinars, online webinar, workshop, capacity building program on a regular basis to support our members. So, uh, so this is a risk score of the district of Rajasthan as of March 2026. So ये सारे पैरामीटर्स आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स के लिए, मल्टीपल लैंडिंग के लिए, डिफरेंस बिटवीन पार 30 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेटेज गिवन हमने 10 दिया है। तो ऐसे करके हमारा पूरा, इसमें आप एनपीए का भी देख पा रहे होंगे, ग्रोथ रेशियो भी देख पा रहे होंगे, और लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं जो रिस्क स्कोर है, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि 0 से 10% के बीच में है। तो 5% के ऊपर जाता है तो हम मानते हैं कि वो रिस्की डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेने की जरूरत है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ न्यू डिस्बर्समेंट, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन और ओवरऑल बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो लगभग आप मार्च का डेटा देखेंगे, क्योंकि जून का डेटा प्रिपेयर हो रहा है, हम जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मार्च का डेटा देखेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लाइक हनुमानगढ़, चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, Palodi, Barmer, we are seeing these districts are currently in no risky districts as per our analysis. So ये हमारा उसी पैरामीटर्स पे बनाया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज है। हमने टॉप 10 को एक बार हाईलाइट कर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, जहां पर हमारा रिस्क स्कोर है विच इज क्लोज टू 7%। आप अगर भीलवाड़ा का देखेंगे लास्ट वाला रो और कॉलम, तो जो कि लगभग 6.70 है, विच इज क्लोज टू 7% आउट ऑफ 10। सो विच इज अलार्मिंग। इसके अलावा ब्यावर, नागपुर, नागौर, झालावाड़, चित्तौड़, अदर डिस्ट्रिक्ट भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज है कि आप देखेंगे, भले ही ये मार्च का डेटा हो, इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज है कि आउट ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 28 डिस्ट्रिक्ट हमारे, जैसा मैंने बताया, 1 से 5 तक है, तो एक बार के लिए स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिस्क ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। बट उसके ऊपर है तो इट मीन्स समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड इन गुड शेप। सो आप देखेंगे कि 28 डिस्ट्रिक्ट का रिस्क स्कोर, ओवरऑल रिस्क स्कोर है ऑन दिस डिफरेंट पैरामीटर्स, इट इज 5.01। उसके अलावा जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं बचे हुए, उसके थोड़े से कम है। एक टाइम पे उदयपुर और साउथ राजस्थान का ज्यादा हुआ करता था, बस स्लोली ग्रेजुअली 2-3 सालों में वो इम्प्रूव हो गया है। तो ये ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं राजस्थान के, उसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट आर स्टिल इन रिस्की डिस्ट्रिक्ट। तो thank you for listening this information. So now we are opening this floor to discuss, and basically
हम ये जानना चाहेंगे कि करंटली जिस तरीके का डेटा बताया गया है, मे बी एज ऑफ जून और एज ऑफ मार्च 2026, तो आप लोगों को क्या उससे सहमत हैं कि आपके जोन में पर्टिकुलरली जोधपुर मारवाड़ रीजन में उसी तरीके का ट्रेंड या आप कुछ देख पा रहे हैं? अगर आपको कोई सीरियस इशू दिख रहा है, सो यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट. सो लेट अस स्टार्ट. Thank you for patiently listening. I would like to call first Satin Microfinance to share your views on your जोधपुर रीजन. अगर आपका कुछ इशू है या फिर ये डेटा से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शन है, so you can share your experience. So over to you, Mr. Bablu Kumar and Satin team. सर हमारा जो है रायपुर मारवाड़ में अभी नया ब्रांच हमने रिसेंटली डाला है, और वाकई को कोई ऐसा नया चैलेंज तो नहीं आ रहा है. ओके. बाकी आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है? जी जी, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ठीक चल रहा है. थोड़ा तो ही में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई फिर मतलब वही विशेष इशू नहीं है. किस तरीके का इशू है? बेसिकली वो इट इज रिलेटेड टू उसमें सर कस्टमर? कलेक्शन का रिपेमेंट थोड़ा डिले हो जा रहा है. कस्टमर मतलब थोड़ा लेट करके किस्त पे कर रहा है. ओके. तो कारण क्या बता रहे हैं कस्टमर? थोड़ा सर कैश इन फ्लो को लेकर की बता रहे हैं कि थोड़ा सर काम धाम कम हो गया हम लोगों का, तो इस वजह से किस्त उनके आगे पीछे करके आ रहे हैं. ओके. ठीक है. ठीक है. इसके अलावा और कोई चैलेंज नहीं देख रहे हैं आप जोधपुर नहीं रीजन सर, में? और कोई कोई इमर्जिंग ऐसा, इश्यूज? हाँ, नहीं सर कोई ऐसा नहीं. ओके. ठीक है. थैंक यू. कैन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? कैन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? हमारे साथी जो जीवन फाइनेंस बैंक से इस मीटिंग में जुड़े हों. एनीवे, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड. अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड. हाँ जी. सॉरी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, महेंद्र पंचारी है. हाँ जी, प्रेजेंटली महेंद्र. नो एनी इशू. ये हम्म. अभी आज के डेट में कुछ ऐसा मेजर इश्यूज नहीं है, और सब कुछ बेस्ट एंड बेटर है बस. हम्म. थैंक यू. ओके. ठीक है महेंद्र, थैंक यू फॉर योर पॉइंट्स. अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथी. ओके. ठीक है. एनीवे, जना स्मॉल फाइनेंस से मिस्टर मोहित, आई थिंक मिस्टर मोहित हैज जॉइंड फ्रॉम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. मिस्टर मोहित, you have to unmute yourself and share your experience. Mr. Mohit from Jana Small Finance Bank. I think he is having some technical issue. Hello, Mr. Mohit. Okay. Any representative who has joined from Midland Microfinance? Midland Microfinance. Mr. Deepak जी अभी तो Srivastava. ऐसा कुछ, हाँ हाँ अभी जी. ऐसा कुछ इश्यूज तो देखने देखने को नहीं आ रहा है कि कोई मतलब नया इस तरीके से डिसबर्समेंट में ज्यादा, लेकिन जो हम वही लोग पुराना ही मार्च का जो है डेटा वही देख चल रहे रहा थे, है। उसमें आपके जितने 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जोधपुर मारवाड़ रीजन के, उसमें हाँ 4 हमारे या उससे जोधपुर ज्यादा. और पाली, एक्चुअल में हम्म. जोधपुर और पाली में ही हमारा ज्यादा है। इधर ओके. बाकी आपका जालौर और इधर तो हमारा कुछ नहीं है। जोधपुर और पाली ही देख रहा था मैं, तो वहां पर इतना कोई मेजर अभी हमको इश्यूज आ नहीं रही है। ओके. तो आपका सही चल रहा है. जी जी, ओके. ठीक है. मतलब रुकता है कलेक्शन, तो कलेक्शन तो हर जगह वही है, मतलब हम्म. रुक के फिर आ रहा है, मतलब एक दूसरे को देखा देखी जो पुराना ट्रेंड है उसी हिसाब से कलेक्शन रुकता और है, ये फिर वही मंथ एंड तक वापस आता है करके फॉलो मंथ अप एंड लेना तक पड़ रहा है, मतलब फॉलो अप लेना. हाँ फॉलो अप ज्यादा ठीक हो है. गया और अभी ये कलेक्शन। बारिश इस बार का जो मानसून विभाग ने बोला था बारिश कम होगा, वैसे भी राजस्थान में बारिश के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है क्या बेसिकली? अभी जो मैं. वो बारिश का तो पड़ेगा अभी, मतलब अभी तो बारिश का चल ही रहा है ना सीजन, अभी तो क्या है, लोगों के पास था थोड़ा बहुत पानी वानी जो भी है, मतलब पर इस बार हम्म. बारिश नहीं हुई है। इसका असर अभी मतलब आपको नेक्स्ट उसमें देखने को मिलेगा, ओके. सितंबर से, मतलब सितंबर अक्टूबर। जी जी, अभी तो इतना कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इतना, तो बारिश का असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार फसल जो बारिश में होती है डिसबर्समेंट हो यहाँ रहे पे। हैं आपके एज पर टारगेट? ओके. हाँ थैंक डिसबर्समेंट यू. तो हो रहे हैं, मतलब वही डिसबर्समेंट हो रहे सिक्सटी हैं टू एज पर?
हाँ, डिस्बर्समेंट चालू है, डिस्बर्समेंट चालू है। वेरी गुड। ओके, ठीक है, थैंक यू। हमारे थैंक यू साथी जो स्वामान फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, थैंक यू मिस्टर दीपक। स्वामान फाइनेंशियल सर्विसेज, या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अभी तो हमारा जोधपुर की तरफ ऑपरेशंस हम शुरू करने वाले हैं, तो ओके ऐसा कोई वो इशू नहीं है, लेकिन ये उदयपुर वाला लोकेशन तो अभी हमारा सही चल रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। शैलेंद्र आप हैं कॉल पे? यस सर, यस सर। हाँ बताइए, अगर कोई इशू आप, हमारे साथी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो वो पर्टिकुलर रीजन देखते हैं, ठीक है। तो कोई कोई अगर शैलेंद्र आपकी तरफ से। सर एक चैलेंज अभी तो कुछ नहीं है, तो चैलेंज अभी तो दिल्ली वाला पॉइंट है वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है शैलेंद्र। मिस्टर संजय, यू आर फ्रॉम सोमान फाइनेंशियल सर्विसेज। चैलेंज कुछ ज्यादा है सर। ओके, हाँ स्वाभिमान से। हाँ, चैलेंज कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, अभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, उनका वॉइस अभी ब्रेक हो रहा है, तो इस नेटवर्क का तरीके का इशू तो होगा मे कोई। बी। हाँ, क्योंकि नेटवर्क इशू है उनका कुछ। ओके, ठीक ठीक है, है। कोई। डू वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एल कंपनी एंड में टी मूव फाइनेंस? ज्यादा कर रहे हैं सर। हाँ, शैलेंद्र कुछ बोल रहे हैं क्या? सर चैलेंज ऐसा कुछ नहीं है, कलेक्शन थोड़ा डिले होता है, आ जाता है, हायरिंग को हाँ, लेकर चैलेंज ज्यादा तो है सिमिलर इस एरिया में। सिमिलर ट्रेंड है, सब लोगों का थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ अकाउंट्स का जो बाद में मंथ के एंड में फॉलो अप में हो जा रहा हायरिंग को लेकर इस एरिया में चैलेंज है थोड़ा सा, है। और उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। बता रहे ठीक है। हायरिंग को लेकर के थोड़ा चैलेंज है, अच्छा, तो स्टाफ रिक्रूटमेंट को लेके थोड़ा सा स्टाफ चैलेंज है। रिक्रूटमेंट को लेकर के थोड़ा चैलेंज है। हम्म, तो आप लोग कैसे करते हैं, मतलब थ्रू वर्चुअल मोड और जॉब फेयर लाइक रोजगार मेला और में भी जाते हैं? नहीं, वर्चुअल मोड पे ही होता है हमारा, एंड ओके, थ्रू सोशल मीडिया अच्छे। नहीं, राजस्थान एडवर्टीजमेंट। गवर्नमेंट रोजगार मेला लगाने के मतलब उसमें अच्छा प्रयास रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो उस प्लेटफॉर्म पे भी आप एक बार लिंक करें, वो आपको हेल्प मिलेगा। लोकल डीआईसी ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं, एमएसएमई ऑफिस से, जो आपको कनेक्ट करेगा रोजगार एम्प्लॉयमेंट विंग के साथ में। सो इट विल हेल्प यू मे बी। श्योर श्योर ठीक श्योर। है, ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ ही दिगंबर फाइनेंस से कोई जुड़े हैं? दिगंबर कैपिन लिमिटेड और दिगंबर फाइनेंस। ओके, ठीक है, ठीक है। तो जितना हमारे साथियों ने बताया, उसके अलावा और कोई एडिशनल पॉइंट हमारे कोई भी साथी अगर शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर। मिस्टर दिलीप, आई एम सीइंग मिस्टर गौरव इज आल्सो हियर। हाँ जी, क्योंकि ये ओपन फोरम है, कोई अगर सीरियस इशू है, आई एम सीइंग लाला राम यादव जो इस मीटिंग में हैं, आई एम सीइंग मिस्टर पंकज शर्मा, आरएम कोटा। हाँ जी, नमस्ते सर, लाला राम यादव बोल रहा हूँ स्पंदना फाइनेंस से सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। बताइए आप लोग का कैसा चल रहा है? सर हमारा न्यू बिजनेस में तो ठीक अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा इश्यू आता है। वो कस्टमर यदि बकेट में मूव हो जाता है तो वो रिसोल्यूशन में थोड़ा इश्यू आता है। वो देखा देखी वाला ज्यादा सिस्टम है, जैसे पिपाड़ सिटी, वो हम्म, बिलाड़ा हो गया हमारा, वो बालेसरी, 3-4 लोकेशन है कि अच्छे। कस्टमर का एक बार बकेट में मूवमेंट होने के बाद में वो वापस से रिसोल्यूशन नहीं हो पाता। उसमें थोड़ा तो सा ये एक आप जो दूसरे बता रहे हैं, कस्टमर, ये न्यू कस्टमर है फर्स्ट साइकिल, या और सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ साइकिल वाले कस्टमर है? ये वो तो कोई भी कस्टमर हो गया ना सर, एक बार चाहे वो फर्स्ट साइकिल हो चाहे सेकंड साइकिल हो, उसमें ओके, थोड़ा इश्यू रहता है, वो रिसोल्यूशन नहीं हो पाता उसका। तो इतने कितने कस्टमर होंगे? सपोज आपके 100 कस्टमर है कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो ज्यादा कस्टमर आपके उसमें चले जा रहे हैं पार बकेट में? अभी तो न्यू बिजनेस में तो नहीं जा रहे, लेकिन जैसे लगभग जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस था ना, उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है सर अभी। अच्छे। मतलब 2-3% चला जाता है। तो उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? आई मीन कोई विलेज मीटिंग और
अलग से विलेज में जाकर अवेयरनेस या कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग? वो तो सर हम प्रोजेक्शन मीटिंग के थ्रू उनको सीबी का कुछ समझा रहे हैं, उनका जो भी लॉस होने अच्छे। वाला वो चीजें उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ना एजुकेट में कस्टमर कम है तो थोड़ा सा अगर ना उसका उतना पढ़ने पड़ रहा है उनका ऊपर। और डिसबर्समेंट का थोड़ा जो टारगेट है वो एज पर टारगेट हो जा रहा है या उसमें भी कमी आ रही है? सर वो थोड़ा सा एरिया को देख के हम उस हिसाब से कर रहे हैं, तो 70-75% हो पा रहा है हमारा। और गार्ड्रेल जो लगा है, गार्ड्रेल आप जानते हैं ना, जिसमें 2+1 लेंडर नॉर्म है, कस्टमर का टोटल एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर वन, आपका वाला, तो वो फॉलो बिल्कुल हो रहा बिल्कुल है? बिल्कुल 100% हो रहा है सर फॉलो। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। हाँ, मिस्टर पंकज फ्रॉम यस यस, कोटा। हाँ जी, हमें थोड़ा सा ये अकलेरा झालावाड़ साइड में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो कितना नया डरता डिस्बर्समेंट है थोड़ा सा माइग्रेशन कुछ ज्यादा हो रहा है। हाड़ौती वो अभी रीजन वो में फोन अकलेरा उतार और दो। अकलेरा है, झालावाड़ है, भवानी मंडी है, उस बेल्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है नए डिस्बर्समेंट में, और खास करके आईजीएल में। अच्छे, अकलेरा तो आपका झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? हाँ हाँ, मतलब इसमें क्या है कि जो हम नया जो डिस्बर्समेंट कर रहे हैं नो हिट नए क्लाइंट को, हम्म उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा। हम्म। तो माइग्रेशन का इशू है और या विलफुल डिफॉल्ट के लिए वो लोग मना नहीं कर रहे नहीं, हैं कि हम ये नहीं देंगे? माइग्रेशन का भी नहीं है। अभी एक दो केसेस में वो देखा है कि थोड़ा इंटेंशन इशू है। कस्टमर क्या कर रही है कि दो तीन कंपनी से एक साथ लेके इधर से फिर उन एक दो कंपनी को और भी ले रही है, मतलब जो है रिपेमेंट बेसिकली दे वहां ले पर रही है। कोटा, कोटा स्टोन मार्बल का काम है, आप देखेंगे झालावाड़ वो पूरा, हाँ हाँ भवानी हाँ। मंडी या रामगंज मंडी वो पूरा स्टोन का काम है। सो वो हम्म मोस्टली वो मजदूरी और उनका जो इनकम जनरेशन एक्टिविटी है वो उसमें है। थोड़ा सा हम्म। संतरे का खेती भी है भवानी मंडी रामगंज मंडी के बीच में भी, जी तो जी बिल्कुल। उससे भी कुछ इनकम जनरेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका बकेट लग रहा है, ये फर्स्ट साइकिल में लग रहा है या सेकंड थर्ड पुराने वाले कस्टमर? ये फर्स्ट साइकिल में ज्यादा आ रहा है। अच्छा। ओके। 2026 का रिसेंट किए हुए केस थोड़े से ज्यादा पार में है। अच्छे, 10-11 तो उसका केसेस है 2026 के। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को लेके थोड़ा सा उनका समझ बनाएं। और हाँ अगर सपोर्ट चाहिए तो हमें भी बता सकते हैं, जैसे हमने कुछ कार्यक्रम अभी किए हैं। अभी हम लोग और भी कार्यक्रम, कस्टमर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, 4-5 महीनों में, अलग अलग जिलों में। जैसा अभी रिसेंटली भीलवाड़ा में किया गया है, उससे पहले डूंगरपुर में किया गया था, उदयपुर में किया गया था। तो वो भी बताइएगा। थैंक यू पंकज। हमारे और कोई साथी जो इसके अलावा कोई एडिशनल पॉइंट यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जो आपके रीजन में पर्टिकुलरली इशू हो या फिर स्टेट में कोई पर्टिकुलर रीजन या कोई इशू हो? मिस्टर देवकरण मीना में देख पा रहा हूँ हमारे साथी एक जुड़े हैं, दिलीप सिंह जुड़े हैं, गौरव, आप लोग भी बोलिए सर। ये मीटिंग में जुड़े हैं तो आप बताएंगे, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो अच्छा बताइए, कोई पर्टिकुलर इशू है, कोई समस्या है वो भी बताइए। मैं देख पा रहा हूँ स्वाभिमान से मिस्टर आदित्य भी ज्वाइन है, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ये मीटिंग आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, बताइए। Sir, I have just joined to record the meeting minutes only. So I'm हम्म। just there for recording अच्छा, minutes. ठीक है, ठीक है, Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू। यस मिस्टर गौरव, आप कुछ आदित्य, बोलना चाह रहे थे? आदित्य actually Hi, sits in sir. head office. We are not अच्छा facing अच्छा, any such kind वो of आपके issue टीम में at से हैं? all the हाँ हाँ, location. Yes, sir. ओके, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। मिस्टर गौरव, आप कुछ बोल Yes, रहे थे इन हाँ, हाँ बोल रहा हूँ। ऐसा करंटली हम लोग ऐसा कोई पर्टिकुलर इन लोकेशंस पे ऐसे प्रॉब्लम में आपका कौन और सा है, आपका कौन सा है जो एमएफआई? आई एम टेकिंग ए जोधपुर, पाली, जालोर एंड नहीं, सुमेरपुर। एमएफआई का नाम। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, हाँ जी, ठीक हाँ, है। तो इन चारों लोकेशन में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। इवन एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी इज मोर देन 99.75% month on month, and disbursement ratio is more than 100% at all 4 locations. So we have not have any issue. ओके, ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, देन इट्स फाइन। इसके अलावा हमारे दूसरे, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। इसके अलावा हमारे कोई साथी और जो, आई एम सीइंग मिस्टर रवि शर्मा हु हैज आल्सो ज्वाइंड,
आपका कोई कोई पॉइंट? योगेश हाँ योगेश बोलिए। फ्रॉम सेटिन। अभी फ्रॉम मैं रिसेंटली जो योगेश फ्रॉम सेटिन। सैटिन, हाँ जी बोलिए। अभी मैं रिसेंटली जोधपुर रीजन देख रहे हैं, और इसमें जैसे कि सर ने भी बताया था कि यहाँ पे सिरोही और सुमेरपुर बेल्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। क्लाइंट का इनकम वाला तो है ही है, प्लस माइग्रेट हो जाते हैं गुजरात की तरफ, वो लोग माइग्रेट हो जा रहे हैं। वो हाँ थोड़ा सा जी। हमारे साइड थोड़ा सा चैलेंज है। नहीं, सिरोही में आज का कोई नया चैलेंज नहीं है, वो पुराना चैलेंज है। और बैंक्स के लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने भी सिरोही में कुछ कार्यक्रम किए थे आरबीआई के मदद से, फिनेंशियल लिटरेसी का, जिसमें आप देखेंगे सिरोही का जो गवर्नमेंट का डेटा है, बैंक्स को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो इशू, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी सब्सिडी से रिलेटेड स्कीम हो, फसल बीमा योजना हो, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई सब्सिडी वाला। तो सीडी रेशियो सिरोही का कम है, मे बी ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और सुमेरपुर एक में सिमिलर रीजन है। सुमेरपुर से सिमिलर है हमारे यहाँ, तो काफी इसमें पैसा फंसा हुआ है सुमेरपुर में। हाँ, एक और कुछ आपके बोल रहे थे आप, बोलिए। आपका नाना हो गया, हिंगोला हो गया, इन सब जगह, रानी जगह काफी पैसा अपना फंसा हुआ है। वो क्लाइंट माइग्रेट होकर अपने गुजरात चले गए हैं। तो ये परमानेंट, मतलब परमानेंट माइग्रेशन है या फिर लिमिटेड माइग्रेशन परमानेंट ही है, परमानेंट है। उनका फॉलोअप चल रहा है, लास्ट 4 to 5 months हो गया उनको फॉलोअप करते हुए। लॉक है पूरा करता है। तो ये 90+ वाले हैं या फिर 90 के मतलब 90 दिन के अंदर वाले? ये 90+ चले गए ये। ओके। देन ये मेरथा में थोड़ा सा दिक्कत आता है। अपने यहाँ पे मेरथा रोड में जो नया अपन लोन जो करते हैं आईजीएल, उसका पैसा फंस मेरसर, जाता है वहाँ पर, मेरथा रोड। मेरसा रोड। जी। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग का जो सीजीटी जीआरटी है उसमें कस्टमर बताता नहीं है, नहीं, या हम समझ नहीं प्रॉपर पाते हैं आते हैं। कि? अपने यहाँ तो जीआरटी, इवन आपको बताएं टीएम करते हैं हमारे यहाँ तो। हाँ। उसमें प्रॉपर होता है, ग्रुप में फोटो वोटो भी आता है, प्रॉपर हो रहा है ना। और उनके स्पाउस जो है, उनके माइग्रेशन पति या ये नहीं है बेटे? कि हाँ, नहीं माइग्रेशन ऐसा, वो रहते भी हैं पर पैसा नहीं आता है वहां पे। मतलब ये है कि 2-3 किस्त देती, उसके बाद पैसा रोक लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पुराने कस्टमर हैं जो पहले भी लोन आईजीएल लिए थे, नहीं, चुका है? नो 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 अच्छे, नो, आईजीएल लोन, आईजीएल। अच्छे, अच्छे, आईजीएल इंडिविजुअल लोन बोल रहे हैं आप? जी जी जी। ओके। इंडिविजुअल ठीक। फर्स्ट साइकिल लोन बेसिकली। हम्म, ठीक है, आई नोटेड डाउन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू योगेश। हमारे दूसरे कोई साथी एल&टी फाइनेंस से जी जुड़े सर। हो? एल&टी जी सर, गुड आशीर्वाद। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस। सर मैं अखिलेश जायसवाल, अखिलेश जायसवाल बोलिए। बोल रहा था, अन्नपूर्णा फाइनेंस से। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, अभी रिसेंटली अभी मैं राजसमंद एरिया देख रहा हूँ, अभी देवगढ़, तोजागो, रामेट, गंगापुर। हम्म, हम्म, तो सर अभी रिसेंटली तो इतना तो नहीं है ऐसा इशू, एवरेज का बिजनेस भी हो रहा है और एवरेज कलेक्शन भी हो रहा है सर। हम्म। आपके अभी दूसरे तो साथी जोधपुर रीजन से नहीं जुड़े हैं, जेडएम? मिस्टर जोधपुर पुष्पेंद्र? टूरिज्म से जुड़े हैं ना सर, पुष्पेन जेडम से जुड़े हुए हैं जोधपुर से, तो और देवगढ़ से तो जुड़े हुए हैं। देवगढ़ से बोलिए ना सर, हाँ जी, तो आप लोग थोड़ा इंसाइट बताइए फील्ड में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर हम आगे डिस्कस करें। मिस्टर पुष्पेंद्र फ्रॉम अन्नपूर्णा फाइनेंस, और एनी अदर टीम मेंबर जो ज्वाइन किए हैं जोधपुर रीजन से? यस। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर जी, बताइए। सुरेश सुरेश बोल रहा था अन्नपूर्णा से। अभी सर हाँ, फिलहाल मेरे हाँ जी। पास में इधर भीम ब्यावर वाला बेल्ट है, इसमें तो हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज सब कुछ ठीक चल रहा है। हम्म। थोड़ा सा ये कलेक्शन का इश्यू आ रहा है, लेकिन वो मंथ एंड तक कवर कर लेते हैं हम उसको, लेकिन फिर भी तो वो ये डिले नहीं रेगुलर चल रहा वाला है एक्स अभी। बकेट बाकी है या फिर पुराने वाले? रेगुलर वाला। अच्छा, कॉमन ट्रेंड में सबका वो कॉमन ट्रेंड ट्रेंड ही है, जी रेगुलर सर। वाले में इशू आ रहा है। बाकी सर अभी मोस्ट जोधपुर साइड में और मेड़ता साइड में थोड़ा इशू आ रहा है ऐसा कलेक्शन का। कैसा कैसा कलेक्शन का इशू आ रहा है? कलेक्शन का सर इशू आ रहा है वहाँ पे थोड़ा, जोधपुर साइड में से थोड़ा क्लाइंट माइग्रेशन का इशू आ रहा है सर। माइग्रेशन तो सर इतने जी। सालों से चला आ रहा है, कोई पर्टिकुलर हाँ पाइपलाइन हाँ इशू या हाँ, रिंग वही तो लीडर इशू इशू ऐसा आ रहा है कुछ सर है क्या? जोधपुर साइड में। मैं वही बोल रहा हूँ, कोई पाइपलाइन या रिंग लीडर का इन्वॉल्वमेंट या लोकल लीडर का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कुछ इशू है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ओके। लोकल का कोई ऐसा माइग्रेशन तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर माइग्रेशन वहाँ तो पे, ना ही कोई पॉलिटिकल माइग्रेशन तो इशू है है, सर। हाँ ये कोई नई चीज नहीं है, हाँ वो हाँ। कॉमन है और रेगुलर। ठीक है, जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर कलीग who wants to say something, who wants to share something?
सर मैं पहल हाँ जी फाइनेंस से मनी। हाँ जी। मनीष जी कैसे हैं, बताइए सर। बढ़िया सर। हमारे बताइए यहाँ क्या चल रहा है। अभी ये जो पॉलिटिकल इश्यूज जो आया है ये थोड़ा सा डूंगरपुर में आया है। क्या जो मामला है। वो जो सांसद है वहाँ का वो नाम मत थोड़ा लीजिएगा कस्टमर किसी को का। हमारे जी फोरम जी। में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेना है। कोई भी एमएफआई या पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लेना। हाँ गो अहेड, बोलिए। हाँ तो वो कस्टमर को थोड़ा मिसगाइड कर रहा है। ये कब का इंसिडेंट है, अभी जो ट्राइबल डे था 9 अगस्त को, तब का बता रहे हैं या उसके पहले का। हाँ उसमें भी आया उससे पहले भी आया ये कंटिन्यू इसको 6 7 8 महीने हो गए। अच्छा, तो इसके वजह से बकेट लग रहे हैं। हाँ मैंने एक बार आपको उसका कुछ क्लिप भी भेजा था यस उसका यस। स्टेटमेंट का। नहीं, हमने वहां पर जाकर कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, लीड बैंक में भी दिया है डिटेल, हमने अभी कस्टमर लिटरेसी प्रोग्राम भी किया है। और अभी की आपको बताऊं, और बाकी लोग हमारे साथ ही जुड़े हैं। और सितंबर 18 के आसपास सरपंच चुनाव का इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट होने वाला है। तो लोकल इलेक्शन अभी पेंडिंग था लास्ट ईयर से, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके अलावा मनीष और क्या दिक्कत है जोधपुर रीजन में, कोई पर्टिकुलर तो इशू। नहीं नहीं सर अभी तो जोधपुर अभी कुछ भी नहीं। सर जो हाँ जोधपुर सुरेंद्र रीजन बताओ। जोधपुर रीजन से मैं सुरेंद्र सिंह एरिया मैनेजर बात कर रहा हूँ। हाँ जी अ, बताइए। हमारे जो मोस्ट जो सर प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा स्टाफ रिक्वायरमेंट को लेके, हायरिंग को लेके समस्या आती है, जो कि हम हम्म। अवेयरनेस करके उसको कंप्लीट।
people. सेवन दोनों काम बंद करके क्या सुन तनाज भाई एक मेल आया है वो कुछ प्रेस रिलीज कुछ करने का बोल रहे हैं कुछ और मैंने बोला अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है प्रेस रिलीज कुछ अगर कुछ होगा इस कैपेसिटी बिल्डिंग जो हो रहा है तो वो लिख के देंगे हम देख लेंगे दो चार कुछ आप उसका रिप्लाई कर दो हाँ, आ, तेरी सूरत भी क्या बोल रहा है ओह, 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 दिमाग थोड़ा सा पलट गया मेरा सुबह सुबह सर मुझे बुला के बोल रहे हैं ये बैग बैग थोड़े से संदीप लेके आया सर मुझे बुला है बोले कि इसमें से कौन सा बैग एक बैग करके दे मैं बैग के बारे में क्या जानती आ, आ,
आज का सुबह हाँ 1,95,000 तो उन्होंने ब्लॉक करने के लिए बोलता। हर हर 2 घंटे में एक कंटेंट ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर आता है फेसबुक के पास। हाँ? वो राहुल गांधी बोला स्मार्ट पैट्रियार्की, तो योगी बोल रहा है आपको पता है महिलाएं बिना पुरुष के रह नहीं सकती। ये ये पुरुष बिना महिला के तो रह नहीं रहे। अब तो लगे हो पता नहीं कहाँ कहाँ। मेरे बरस करती सिंपली बातें करे जो मर की। हाँ मेल लिखा, कुछ बोला ही नहीं। कुछ कभी कुछ बोलता है ना, वो मेल देखता है ना कुछ करता है। फोन करती मेल नहीं दिखता। किसके साथ डिस्कशन करना है वो? डिस्कशन किसके साथ करना है? आह, हाय कार्तिक, हाउ आर यू? आर यू ओके? Good. I'm good. I'm good. So the note about that Srinidhi, no? Um, that have you prepared or you will be preparing? Okay. Saibal only told me to follow up, so that is why I didn't know you had told. 27th is the discussion, right? Uh-huh. Okay. So 27th discussion with whom? Huh? Discussion with whom? Yeah, yeah. Yeah. No, no, I asked a discussion with whom about Srinidhi? Oh, हो अच्छा 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 ओके 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 देन ओके आपने फॉलो किया था श्रीनिधि के बारे में? श्रीनिधि के बारे में फॉलो बोल रहा है। आई ऑलरेडी टोल्ड देवेंद्र। श्रीनिधि
हाँ ना ना ना, वो बोल रहा है कि कॉल के मुझे पता नहीं था ना कि कॉल कब होगा, किसके बारे में होगा। वो मंथली, हमारा जो मंथली होता है। ओ ओ सही। ये क्या कब हुआ?
हाँ? क्या बचा है? कौन सा जो? कौन सा मीटिंग हमने कर दिया क्या? पूछे क्या पूछ रहे हैं वो तो? लाला तेरी कलप कल की। डीपीडीपी तो हो गया।
मेरी करस किसका? मेरे पास होगा। कहाँ है?
कितनी बार ये क्रेडिट कार्ड मुझे दे देगा पता नहीं। इनका ऑर्गेनाइज सर का नाम क्या है? सालिमा सर। वो साइन करना है आपको। चलो हाँ। बजट बढ़ा इवेंट का बढ़ाया क्या है और जो फीस है ये भी एयूएम सेकंड में हो रही है ऑन पहले चीन और पहले चीन इसलिए ऑन बैलेंस आप इसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे? मैं आपको भेज रही हूँ सबर देवेंद्र। 3 डॉक्यूमेंट्स है। ग्रुप में भेजा 5 इसको this this has been subscribers calling out this one subscribed with this मतलब on the IC portfolio उसके ऊपर minus this ठीक है इसके ऊपर हमारा 0.44% सिर्फ और बैलेंस शीट में दिया ये ऑन बैलेंस शीट इसके ऊपर इसके ना ये देखो ये माइनस में करके ये है उसके ऊपर ये लगा और ये ऊपर तो कितना ये देखिए इसका ये ये फीस है ना 293 फीस हाँ इसका वही फीस बनता है 293 हाँ 293 फीस ये नहीं इसका
ऑन बैलेंस शीट कितना है, इसका परसेंटेज करोगे तो इतना ही आएगा। 293 रुपीज फीस होगा सर, उसका एक बिल है, वो लिखना चाहिए था। हाँ हाँ, वो कैलकुलेशन करके दे दिया। अब इसमें तुम लिखो इसमें क्या है, और इसमें देखो कौन वाला तुम्हारा वो 1,50,000 के नीचे आ रहा है, बस हो गया। इसमें हाथी होगा नहीं करके देना चाहिए था ना, क्यों वो करे GNB में क्या है, और वाला लास्ट वाला ये पूछता है टोटल रिव्यू है। हाँ ये हमें जरूरत है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर डाल एक चीज है, तो नंबर इसका ऑलरेडी डाल वो की बात है। ये तुम्हारा ऑन बैलेंस शीट है, हो सकता है कुछ ऑफ बैलेंस शीट इसके साथ, जैसे मान लो कि इसके साथ ऐड करके ये सांस है मेरे मेल बॉक्स में जी। उसका बीसी का भी एक ही पीस है, ये इन लोग का हमारे हिसाब से कितना पीस है इसलिए लिंक में चेक की इसके साथ 1,50,000 के नीचे आ रहा है पीस क्या करना चाहिए, ये एडिट इसके पीस है ऐसा ऐसे तो अंडरस्टैंड ये इसमें 1,50,000 इसका सीलिंग है, क्या नाम उसका बोलो फ्लोर है, ये सब वाला चाहिए था ना 50,000 सभी पर की बात अंडरस्टैंड, ये उनका कैलकुलेशन है करके दे दिया, दैट्स आवर जॉब टू डू कि हम लोग एक मार्क करते हैं कि ये सब 1,50,000 तुम पहले यहाँ पर लिखो कितना हमारा फोटो ये होता है, फीस कितना होता है हमारे हिसाब से लिखो ये इसका देखो ये हमारा बोर्ड की ऊपर है फॉर्म उठा लाए हैं बहुत सारी चीजें हैं, तुम इसका सिर्फ इसको लगा के रखो बस, और चीज लगा भी कैसे देखो, अगर किसी का फीस अलग है उसका अलग है, तुम इसको लगाओ तो पहले देखेंगे उसके बाद देखेंगे, पहले इसको लगाओ तो काम कर देते हैं, नहीं बिल्कुल वो और क्या काम करके दिया यहाँ तक पूरा काम करके नहीं, दैट्स नॉट हिज जॉब, उसका ही जॉब है सर, ये प्रोडक्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या कुबेर कनक कौन है, कुबेर कनक मैं जानता हूँ कुबेर कनक कितना हो गया उसका नाम क्या है कुबेर कनक है तो हमारा मेंबर। बहुत बोला है, आपको मेंबरशिप का हेड बनाना चाहिए, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है सबको मेंबर बनाना, मैंने तो देखा है मेंबरशिप लिस्ट में। तो बनाओ ना, अच्छी बात है, मैं कब बना और वो कौन सी रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी उसको मेंबर बना दिया, आज तक बना ही नहीं। मत करो यार, जो दिल्ली के अंदर ना मत करो, दिल्ली के अंदर तो कुछ मत करो, उसका प्रॉक्सी है हाँ, कुछ मत करो। दिल्ली के अंदर क्या उसमें करो तो तुम्हारा सब बोला कर ठीक है बस, और कुछ मत करना, ये भी ठीक है सर, पहले 20 साल पे उसको दिया हमने, 10 साल पे बांट लिए उसको कैंसिलेशन चार्जेस, 10 ग्राम में कैंसिलेशन चार्जेस काटा है। हाँ ये बहुत बताओ क्या बोल, अभी 100 हो गया हमको बस अभी तो निकल गया वाटर पॉइंट लेकिन उसका ये जिसने चोरी हुआ तो उस समय तो बहुत बढ़िया लगा था, चोरी नहीं हुआ चोरी वीडियो
उसमें क्या हुआ, सेम बैक तो नहीं लगता, लैपटॉप चाहिए तो हेल्प करना पड़ेगा, लैपटॉप तो लोगों की वो अपना कॉलेज नहीं पहुंचे, कॉलेज पहुंचते तो मिलता है, तो वो मल्टो प्लस दिखता है, उसका बैंक का आई कार्ड से फॉर्म कर दे, मैं तो आई कार्ड नहीं दिख इतना देर कर तो मेरा आई कार्ड में नीचे रहा है, अगर मैं अगर मालूम मैं मेडिक्लेम पॉलिसी पढ़ा है, कहीं मेरे को कुछ हो जाए तो बोलूंगा मेरा पॉलिसी है, मेरे पास बस सही बैक एंड ये आना चाहिए, अच्छा ये सब चीजें आपको पड़ेगा, हाँ सारा डिटेल कल तो बोलेंगे तुम्हारा मेडिसिन पॉलिसी नहीं है, हॉस्पिटल का बिल कौन देगा, इसलिए ले जाएंगे तो पिन नंबर से ना पिन नंबर सब दे देते तो आई कार्ड में है सब एंड मेरे को सब प्रोफाइल देता हूं, जीरो बैलेंस ये असल में बोलो अगर उसमें आई कार्ड नहीं होता साइड वीडियो और मुझे बैग मिलता है रखना चाहिए, तुम्हारे से तो सीख लेंगे, लड़की की कंफ्यूज हो जाती है इसका पहचान किया है क्या डाउटफुल हो, अगर तुम लेके चल लेते तो फिर से कुछ होता ही नहीं, मुझे 3-4 दिन लगते थे रिकवर करने, तो वो सीसीटीवी कैमरा दिखता है कौन देखता है एफआईआर करता है लड़की पकड़ी जाती है, ऐसा होता है मगर ये इंसिडेंट होता है, मतलब वही मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है, उस एफआईआर कर मैंने ले गया कौन सी मेट्रो कोई दसल मेट्रो स्टेशन कौन सा दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन दशरथपुरी रामायण अब पहले तो सुन रहे हो नाम बहुत पॉपुलर हो पहले तो सुन दशरथपुरी चले तो सुना था दशरथपुर तो बड़े आगे वाले दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन है जो सर जनक सुना दशरथ से समझी आ गई जनक संदीपपुरी सुना था मेट्रो स्टेशन संदीपपुरी संदीपपुरी मैंने ये नहीं सुना है रावण किसका है रावण ये तो रखना चाहिए वही तो रामपुरी चाकू सबसे बेस्ट नाम क्या है सकल भी है सीता रसोई सीता भी है हाँ ये वो तो लक्ष्मण हाँ सीता रसोई मेरे श्री नाथ भी मैं तो शेष क्या पता कोई चढ़ेगा वो क्या है सीता रसोई चढ़ेगी वो है उसमें शायद सीता रसोई तो मैंने कहा भी खाया मेरे घर के पास सीता रसोई एक वन टाइम खाया तो स्टान ऑन बेचारा मिला सीता रसोई खाया तो No, 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 no. अरे ये लोग मुझे काफी परेशान करते हैं।
there's no press release scheduled. But the point is that we should be looking towards creating some such press, right? That's what we had originally mentioned. And it's also in the scope of work in our MOU. So I'm asking what kind of press release, what kind of PR, if at all, that we want to do. We discussed internally with Axion's team, Axion's communication team. They suggested that we post something similar on LinkedIn, like the link I sent you earlier. So if you could please have a look at that and let me know if we can put something like that, publish it together online, that would suffice. And if we do such a thing, my question to you was, what kind of content, what do you want us to specifically mention? Is there any kind of, important phrase or something that you want us to publish? Let us know so that we can also include that in our communication. Thank you. ये आपने नहीं किया अभी तो रेस्पॉन्ड कर दीजिए। सर दुख गया। सो जाती हूँ थोड़ी देर। लोग हों किसी
गर्ल्स हॉस्टल में प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाते हैं? कोई 1 महीना रह गया तो उसके पीछे मुझे समझ नहीं आया कि क्या लॉजिक है। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। अच्छा है। फोन क्या कर रहा है पता चले। अरे तुम्हारे इसको क्या नाम है, बैंगलोर में तुमने देखा? हाँ, वो HIV को शूट, तो उधर वो लड़कों को भी हुआ रहेगा ना। चलो हाँ, तो फिर उनका कौन सा टेस्ट होता है फिर? क्या टेस्ट होता है? वो HIV टेस्ट करो सबका, वो समझ में आता है। प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सोचा कुछ खाना खाने के लिए ला रहा है। हम्म। ना My dear child, lean in close and lend me your spirit. For I have known a thing or two about waiting, about wandering, about the wilderness. But I have also known about the whisper of heaven in the dark hours. When God is about to move, beloved, the earth quivers. And if you are still, if you are willing, you will see the signs. You may not recognize them at first. They do not come wrapped in gold, nor are they shouted from the rooftops. No, no. God is far too divine to be predictable. His ways are not our ways. His blessings do not arrive by mail. They are birthed in the labor of becoming. Let me tell you, when God is about to give you something big, something mighty, something eternal, he will first unmake you. Oh yes, child. You will feel the breaking before the blessing. It is not punishment. It is preparation. There comes a time in every life, my dear, when heaven grows quiet. The voices fade. The music stops. And the once busy halls of your world feel like an empty church long after the sermon has ended. It is in this hush, this holy pause, that God begins his most intimate work. You see, people will tell you that greatness comes with applause, that destiny shouts from mountaintops, that divine assignments arrive with trumpets and fanfare. But that's not how the Almighty moves. No, he moves in whispers. He shapes in silence. The creator of the galaxies, the one who said, "Let there be," and split the darkness with light, does not need noise to do his will. When God wants to do something deep in you, something sacred, something that cannot be undone by time nor touched by man, he brings you into the quiet. At first, it might feel like rejection. You'll wonder why the phone has gone dry, why the crowd you once danced with now walks another path, why the people you poured into, who drank from your well and praised your name, no longer reach for your hand or remember your face. And the heart aches in those moments. Oh, child, I won't pretend it doesn't. The soul stretches and strains, crying out, "Why have I been left alone?" But you haven't been abandoned. You've been summoned. God is calling you away, not out of punishment, but out of promise. He knows that what he's placed in you, what he's about to birth through you, requires focus. It demands quiet. It needs stillness. Just as a painter needs a clean canvas, God clears your space. It is not a breaking. It is a becoming. Think about the womb, how silent it is. No one hears the shaping of a spine, the forming of fingers, the rhythm of a tiny, beating heart. But in that silence, life is forming. And so it is with you. You are in the womb of transformation. The holy hush that surrounds you is the room where heaven meets your humanity. For it is there, in the stillness, where the Spirit of God kneels close. He brushes away the distraction. He tunes your ear to frequencies that cannot be heard in a crowd. He teaches you the sound of your own soul. He reminds you of your name, not the one given by men, but the one etched in eternity. The name he called you before the foundations of the earth were laid. And so you will find yourself alone, but not lonely. Silenced, but not silenced. Hidden, but not forgotten. Because what God hides, he is healing. What he silences, he is strengthening.
Let the world spin. Let the noise continue elsewhere. You have been chosen to step aside, to sit with the silence, and to let it stretch you. For there are things God can only tell you when it's just you and Him. There are secrets too sacred for the crowd. There are lessons too deep for a sermon, and blessings too weighty for public display. You will cry sometimes, yes. You'll stare out the window at a world that seems to have moved on without you. You'll long for the comfort of familiar laughter, the warmth of old friendships, the echo of belonging. But remember this, when God pulls you into solitude, He's making you solid. When He calls you out of the multitude, He's refining your multiplier. Even Jesus, sweet Jesus, who walked among men with healing in His hands, had to pull away. He climbed mountains alone. He prayed in gardens no one else could enter. He bore a cross that no one else could carry. And if the Son of God needed silence to fulfill His purpose, so do you. The silence is your sanctuary. It is there that your strength is restored. It is there that your mind becomes clear. It is there that you are reminded that your worth was never in their validation, their approval, or their applause. You are worthy because you exist. You are loved because you breathe. You are chosen because God said so, and His voice still echoes louder than any silence. So sit, child, sit with the silence. Don't run from it. Don't try to fill it with noise or numb it with distractions. Let it settle. Let it cover you like a warm blanket at the end of a long, weary day. Let it teach you. Let it sing to you. Let it cleanse you of every lie you believed when the noise was loud. The silence is not your enemy. It is your elevation. This is where roots grow. This is where wings are formed. This is where God folds you into His arms and says, you don't need them to see you. I see you. You don't need them to choose you. I chose you. And once you've learned the lesson of the quiet, once the silence has carved wisdom into your bones and soon strength into your spirit, God will speak. Oh, He will speak. And when He does, the silence will part like the Red Sea, and you'll walk forward with clarity, power, and grace. You'll rise, not as a victim of abandonment, but as a vessel of assignment. You'll speak, not to impress, but to bless. You'll lead, not for fame, but for purpose. And those who wondered where you went, those who whispered your absence like a scandal, will look again and see a soul reborn. But by then, you won't need their eyes. You'll be walking by faith. So the next time you find yourself alone in a room where the echo is louder than the conversation, the next time the invitations stop coming and the spotlight dims, don't ask, what did I do wrong? Ask, Lord, what are you trying to show me? Because He is showing you something. Not out there, but in here, deep within, where true transformation happens. You are in the hands of the potter, and in this quiet hour, He is shaping your destiny. So wait, trust, be still. Let the silence do its sacred work, and soon, very soon, the sound of your rising will shake the earth. But for now, sit in the silence and let God finish what He started. Amen. There will come a time when everything that once made sense no longer does. You'll wake up in a world you recognize, but feel like a stranger in your own life. The pieces that used to fit together now press against each other with friction. The job you once prayed for feels like a prison. The friendships you celebrated begin to wither like flowers starved of sunlight. The path that was once paved and sure beneath your feet is now cracked, uneven, and unfamiliar. And in that moment, child, you may be tempted to think you've lost your way. You may question your prayers. You may wonder if you heard God wrong. You may even look up with tear-filled eyes and say, Lord, why is everything falling apart? But I came to tell you something today. It's not falling apart. It's falling into place. The God who created you, who sculpted your soul with His very breath, does not need your life to remain comfortable in order to make it meaningful. He doesn't bless by coddling. He blesses by shifting. And oh,
how that shift can shake you. He shakes the branches so the dead fruit will fall. He rattles the windows so you'll stop staring at the view and start opening the door. He overturns tables in your temple, not to destroy, but to cleanse, not to punish, but to prepare. Divine disruption is not chaos. It is choreography. It is heaven's hand rearranging your life for greater purpose. You asked for God's best, but did you expect it to fit in your plan? You prayed for elevation, but did you think it would come without excavation? No, beloved. Before the building comes the breaking. Before the blessing comes the blueprint. And sometimes, before the promise comes the earthquake. You see, when God is about to give you something big, he doesn't start with additions. He starts with subtractions. He removes the scaffolding. He dismantles the stage. He pulls the rug right out from under what you thought was solid. Because what's coming next can't be built on unstable ground. You may not understand it right now. It may not make sense when the job lets you go, when the friend stops calling, when the money dries up, when the door you were running toward slams in your face with a sound so loud it echoes in your chest. But child, trust me, what feels like rejection is often redirection. What seems like a loss is often a divine trade. God removes what you thought you needed, so you can receive what he knows you were born for. And that transition, it's messy, it's painful, it's confusing, but it's holy. God disrupted Abraham's comfort to make him a father of nations. He disrupted Moses' palace to prepare him to part the sea. He disrupted Ruth's sorrow to bring her into the lineage of the Messiah. He disrupted Mary's quiet life with a virgin birth. And he disrupted Jesus' tomb so that we might live. So why, then, do we tremble when our world is shaken? Why do we assume disruption means destruction? Sometimes, child, the walls are not crumbling to crush you. They're falling to set you free. Because God sees what we don't. He knows what's ahead. He sees the traps laid in your future, the burdens hidden in your blessings, the enemies dressed as friends. And in his mercy, not in his anger, he begins to disturb the peace you've made with the mediocre. He won't let you settle. He won't let you shrink. He won't let you live 1 inch below your purpose. So he interrupts, he interferes, he intervenes. You thought the plan was perfect, but God says, no, I have better. You thought the relationship was sent from heaven, but God says, no, this is not love. It's distraction dressed in desire. You thought the dream was the destination, but God says, that was only a detour on the way to your destiny. And when he says it, he doesn't always explain it, because God doesn't owe us an outline. He offers us a walk of faith. And faith, my dear, isn't proven when everything is still. Faith is proven in the storm, when the ground shakes, when the sky darkens, when you can't see the way forward, but you move anyway. Divine disruption will test you. It will ask you who you really trust. It will ask you if your faith is built on outcomes or intimacy, if your praise is rooted in provision or in the provider himself. And if you listen deeply, if you stop trying to run back to what God is tearing down, you will begin to see the beauty in the breaking. You'll see how the lost job made room for the calling. You'll see how the broken friendship protected your heart. You'll see how the unexpected no was the doorway to a divine yes. You'll see that God's disruption is often a mercy in disguise. For what you thought was delay was his divine timing. What you saw as detour was actually deliverance. What you feared as ruin was really a reset. So, don't curse the shaking. Don't despise the mess. Don't run from the confusion. Sit in it. Pray through it. Dance in it if you must. Because, child, what God disrupts, he also designs. What he allows to fall apart, he intends to raise higher. You are not being abandoned. You are being realigned. You are not being punished. You are being positioned. So when everything begins to shift, when the life you knew is no longer the life you live,
when people leave and plans break, and the future looks nothing like what you pictured. Lift your head, straighten your back, take a breath, and say to yourself with holy assurance, this is God, this is holy. This is not the end, it's the beginning, because disruption is not death, it is the womb of destiny. And in the hands of the Almighty, even the most broken pieces become part of the most beautiful masterpiece. So don't be afraid, child. When your world begins to tremble, God is near, and something greater is coming. Amen. There are moments, child, moments so tender and mysterious, when the air around you seems to whisper something divine. You walk into a room and eyes turn, not because you asked them to, not because you wore the finest dress or spoke the sweetest words, but because something invisible cloaked you, kissed your shoulders, and said, this one is marked by God. You may not see it in the mirror. You may not feel it when the morning greets you with weary bones and yesterday's worries still clinging to your clothes. But rest assured, the favor of God is upon you. Not because you earned it, not because you paid for it in suffering or sacrificed enough to be worthy, but simply because He chose you. Now, favor is a strange thing, child. It doesn't always make sense. It doesn't knock politely or explain itself with logic. Favor isn't fair, and it doesn't follow formulas. It walks boldly through the back door of your life and rearranges things. Where others are pushing and pulling to make their way, you find doors swinging open for you, like the wind itself heard heaven's instructions. Where others toil for years just to be seen, your name is whispered in rooms your feet have never even touched. Where people count their qualifications, you are counted as called. That's favor. And oh, how it confounds those watching. Because when favor settles on you, you become a walking contradiction. You're not the most educated, but you're the most enlightened. You don't have the background, but you carry the brilliance. You may not know the right people, but the right one knows you. People will ask, how did she get that job? How is he still standing after all that pain? How does she shine like that with so little help? How did he make it through when so many others fell apart? But child, don't waste your breath trying to explain what only the Spirit can reveal. Because favor can't be analyzed. It must be discerned. It's not about what you've done. It's about what God decided. And when He decides to favor you, even your flaws become part of the masterpiece. Even your mistakes start preaching sermons you never meant to write. Even your detours turn into divine choreography. You'll wake up in places you didn't plan to be, surrounded by blessings you didn't know how to pray for. You'll look around and feel the soft brush of God's grace resting on your shoulders like silk. But don't confuse favor with fortune, no. Sometimes favor looks like storms you survive. Sometimes favor is the cancer that didn't come back. Sometimes it's the rejection that protected you from ruin. It's the no that saved your soul. Favor doesn't always show up as a miracle. Sometimes it walks in as endurance. Sometimes it disguises itself as delay, so your blessing doesn't arrive before you're ready to carry it. Favor has a rhythm. It's the beat behind your quiet resilience, the melody in your laugh when you've cried all night, the harmony in your spirit that keeps singing, even when your world feels like silence. And child, I must tell you, favor is not always comfortable. When God favors you, He'll pull you out of crowds that once cheered for you. He'll separate you, sanctify you, set you apart. Because you were never meant to blend in when you were born to stand out. Favor will make you feel lonely before it makes you legendary. It will ask you to walk alone, to carry dreams that don't fit in other people's mouths, to keep showing up when there's no applause, to keep trusting when the way is hidden, to keep believing when all you have is a whisper and a word. But child, favor will keep you. Favor will feed you in famine.
Favor will fight battles you never knew existed. Favor will place a hedge of angels around your name, your house, your peace. When you should have been counted out, favor stepped in and wrote your name in light. When you should have broken under the weight, favor lifted you with hands unseen. When you were overlooked, undervalued, misunderstood, favor saw the you that God created and said, "Let them rise." And rise you shall. For no pit is deep enough to bury one crowned by heaven. No lie is strong enough to silence a truth wrapped in favor. No weapon forged in darkness can outshine the brilliance of someone lit by divine grace. You may not know the hour or the moment. You may not feel like anything grand is coming. But when favor finds you, it doesn't need your awareness to work. While you're sleeping, it's moving. While you're weeping, it's weaving. While you're waiting, it's warring on your behalf. There will be days when you wonder why now, why this? But child, you don't need to know the why. You only need to know who. And when the who is God, that's enough. So walk boldly, even when your knees shake. Smile gently, even when your heart carries sorrow. Speak softly, with the authority of one who knows heaven listens. Move forward, not because the road is easy, but because favor paves the way. And don't ever apologize for the light you carry. Don't shrink so others feel tall. Don't dim because someone else refuses to open their eyes. Let your favor speak. Let it shine through your life like sunlight through stained glass. Colorful, imperfect, but still glowing. Because somewhere, someone is watching you rise and thinking, if God can do it for her, he can do it for me too. And that's the beauty of favor. It doesn't just bless you. It becomes a beacon for others. It lifts you so you can lift them. It graces you so you can grace the world. It finds you so you can become the very evidence that God is still moving in this earth. So yes, child, walk like you're favored, because you are. Not because you're perfect, but because you are his. And in that truth, you have all the favor you'll ever need. Amen. There comes a time in a woman's journey, in a man's quiet walk with God, when the soul starts to stir and the heart begins to ache. Not from sorrow, but from a holy yearning. You can't quite name it. You can't describe it in plain words. But it feels like your spirit is being called home to a higher place. And no matter how you try to stay planted in what's familiar, something in you starts to stretch. Something in you begins to rise. It is not ambition. No, ambition wants the crown. This is assignment. This is elevation that can only come from the hand of the Almighty. You were never meant to stay where you started. You were never meant to cling to comfort like a child to a fading lullaby. There is a river in you running wild and deep, and it's pushing you toward higher ground. Oh, child, God is calling you upward. And when he does, you can't pretend not to hear him. Even if you try to silence it, the whisper gets louder. Even if you try to sleep it off, the dream comes again. Even if you turn away, the pull gets stronger. You find yourself restless in circles that used to satisfy. You can't laugh the way you used to with the same crowd. You can't dance to music that no longer matches your rhythm. Your spirit, once content to sit still, is now leaning forward, expecting something, waiting on something, pressing for something greater. Because when God is about to do something big, he doesn't just shift your surroundings, he shifts you. Your appetite changes. Your tolerance tightens. Your discernment sharpens. You start seeing through things. You see through flattery. You see through mediocrity. You see through the masks people wear and the ones you once wore too. And more than anything, you see through your own excuses. That's when you know it's time to rise. But rising, my dear, isn't as simple as standing. It's a process. It's a surrender. It's a shedding. To go higher, you must let go. Let go of what's heavy. Let go of who can't walk with you anymore. Let go of the lesser version of yourself that you clung to like a security blanket. It hurts.
Yes, it does. Because elevation often feels like isolation. You'll feel alone at first, like nobody understands this fire that's burning in your bones. You'll look around and realize you've outgrown some conversations, outgrown some patterns, outgrown some spaces. Not because you're better, but because you're becoming. God doesn't call the arrogant to higher ground. He calls the willing. He calls the ones who tremble but say yes anyway. He calls the ones who are willing to climb, even when the mountain looks impossible. He says, come up here. Come where the air is thinner and the vision is clearer. Come where you can't depend on your strength, but you must lean wholly on mine. And oh, how he walks with you up that hill. With every step, he strips off the old labels, not good enough, too broken, too late. He replaces them with truth, chosen, anointed, mine, a child. Do you feel it? The shift, the stirrings in your belly that tell you you're no longer who you used to be. You're being transformed, not by striving, but by surrender. Not by force, but by faith. You may have thought you were forgotten, but God was simply preparing the altitude for your arrival. Because higher ground isn't crowded. Not everyone can go. Not everyone will go. Some will misunderstand your growth. Some will resent your rising. They'll try to tether you to the past with old memories and old mistakes. But you've got to smile gently and walk anyway. Because you weren't saved to stay still. You weren't healed just to survive. You were lifted to lead. And to lead, child, you must climb. Not above people, but above fear, above doubt, above insecurity, above small thinking and safe living. You must rise above your history so you can meet your destiny. Higher ground doesn't guarantee ease. The climb is steep. Your legs will ache. You will get tired. But on higher ground, the view is clearer. You see what others can't. You hear heaven more plainly. You carry weight, yes, but it is glory, not grief. You become the person you used to pray for. Not perfect, but powerful. Not flawless, but faithful. Not untouchable, but undeniably touched by God. And child, don't you know, you were built for this. Every tear prepared you. Every disappointment molded you. Every closed door taught you to trust. Every wilderness built your worship. You're not here by accident. This higher calling has your name engraved in it. And when you get weary, remember this, you don't climb alone. The same God who called you is the God who equips you. He sends angels to walk beside you. He places promises beneath your feet, so each step is holy. He speaks courage into your bones when your faith begins to waver. And there, yes, there, on higher ground, you begin to see why the climb was necessary. You understand why the valley had to come first. You realize why certain people couldn't continue the journey. You see the purpose in your pain. You see the anointing in your affliction. You see the light breaking through your scars like stained glass kissed by the sun. Because you, dear one, are not just rising. You are ascending, not for applause, not for validation, but because heaven has summoned you to something greater. So if you feel the pull, don't ignore it. Don't water yourself down to fit into shallow spaces. Don't quiet your roar to make others comfortable with your silence. Rise. Rise with grace. Rise with conviction. Rise knowing that every step you take upward leaves a footprint for someone else to follow. You are not climbing for yourself alone. You are breaking ground for generations. You are becoming a lighthouse for the lost. You are stepping into destiny's spotlight, not to be seen, but to illuminate. And as you rise, let your soul sing. Sing the song of those who didn't think they could make it, but did. Sing the melody of the once broken who became whole. Sing the hymn of every weary heart that now beats with purpose. For you, beloved, have been pulled to higher ground, and heaven is rejoicing. The angels are watching, and the wind beneath your wings is whispering, go higher still. Amen. Before a seed becomes a tree, it must first be buried in darkness.
Before the sun can rise in glory, it must press its way through the shadows of the night. And before a soul is lifted to the place God has prepared, it must often pass through fire, not to destroy it, but to refine it. So it is with you. Child, when the winds howl against your window and the rain soaks through your roof, when betrayal knocks on your front door and doubt takes a seat at your dinner table, don't think for one moment that it means you are forgotten. No, darling, quite the opposite. The storm is a sign. The resistance is proof. The attack is a holy announcement whispered through chaos. God is about to elevate you. You see, just before you rise, life will test every inch of your resolve. The enemy does not throw stones at empty nests. He waits until the eggs are about to hatch. He does not roar at barren fields. He prowls around when the harvest is near. And when God is on the edge of unveiling something glorious in your life, every opposing force will rise to meet you. You'll feel it. The tug, the strain, the tension between your present and your promise. People who once embraced you will suddenly distance themselves. Places that once felt warm will turn cold. And just when you think you've found your footing, the ground may tremble beneath you. But don't you crumble, sweet one. Because even in the tremble, God is building a foundation that cannot be shaken. The truth is, elevation attracts attack. Before Jesus performed his first miracle, he was led into the wilderness, not by Satan, but by the Spirit. Before David sat on the throne, he was hunted in caves. Before Joseph wore the robe of honor, he was stripped, sold, and silenced in a pit. And before the butterfly spreads its painted wings, it must wrestle in silence inside a dark cocoon. So if you feel attacked, emotionally, spiritually, mentally, breathe, beloved. Breathe deep and know this: you are not dying. You are becoming. The attacks come to distract you, to discourage you, to discredit what God has already declared over your life. But let me remind you, no devil in hell can overturn a decree from heaven. And when God says, it is time, no rejection, no slander, no delay can stop the rising that belongs to you. The lies will come. Whispers in the dark telling you you're not ready, that you're not enough, that your past disqualifies your future. But remember, child, those voices are not truth. They are echoes of fear trying to keep you small. Do not dance with doubt. Do not dine with defeat. Stand tall, even if you must stand alone. Cry if you must, but don't quit. Bend, but don't break. Because God is not just preparing a table for you. He's preparing you for the table. And that preparation, oh, it can be painful. It may feel like abandonment, like loss, like silence from heaven. But silence is not absence, it's strategy. God is working behind the curtain, rearranging, aligning, elevating things in the unseen. Just as a potter presses and spins the clay before it becomes a vessel of beauty, God is shaping you in the fire so you can carry the weight of your calling. And child, don't be surprised when the attacks come dressed as people. Yes, people. People you loved. People you trusted. People you thought would be clapping when your blessing arrived. But instead, you find them standing in the shadows, arms folded, lips twisted in envy. Do not let their bitterness shrink your blessing. Their reaction is not your responsibility. Their betrayal is not your burden. Your only task is to stay the course, even when the path feels lonely. Elevation is often misunderstood. People see the light, but they don't know the crushing it took to shine that bright. They see the crown, but not the thorns pressed into your scalp to prepare you for it. They see your joy, but never heard the nights you wept so loud heaven had to send angels just to hold your heart. You are rising. That's why the attacks have intensified. You are stepping into alignment. That's why the warfare has grown heavier. Because the enemy doesn't bother those who pose no threat. But you, child, you are dangerous to darkness. You are light wrapped in flesh. You are thunder in soft shoes. You are a miracle in motion. So hold your head high, even as arrows fly.
Sing, even with a trembling voice. Pray, even when you don't feel strong. Because every attack that comes is a stepping stone, not a stumbling block. The pain is purifying you. The opposition is positioning you. The heartbreak is shaping your compassion. The suffering is birthing your wisdom. There will be moments when you want to fight back. With words, with wrath, with fire. But fight differently. Love. Fight with silence. Fight with obedience. Fight by letting God defend you. For he said, vengeance is mine. And when God fights for you, no hand raised against you can remain. Let them mock. Let them doubt. Let them walk away. Because when God elevates you, even your enemies will have to watch. Not so you can boast, but so they'll see what grace looks like when it walks in human form. So they'll witness the power of staying faithful in the face of fire. You will rise, not because you forced it, not because you manipulated the path, but because you endured the attack without losing your heart. And when you reach that higher place, not just in तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ संगीता तुमने वो देखा है? क्या नाम है वो ऐप उसके साथ बात किया था? हाँ We are वो looking तो for people वो बोल over रही है 40 who want to actually कि master उनको AI एक डॉक्यूमेंट चाहिए and get certified in 28 कैसे days. No free time needed, NBFC just 10 का minutes a function day. है In 1 week, you'll feel unstoppable. कौन सा In 2 डॉक्यूमेंट weeks, you'll know more than your colleagues. In 1 month, certificate. See the full program. बोलो कि आप लोग का स्ट्रक्चर कहाँ से मिले? That's why we were trying to get वो स्ट्रक्चर देखने के बाद how their these packs. So they do have आप a अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? अगर आंसर इसे यस है तो मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूँ और इस वेबिनार में मैं आपको 3 सीक्रेट दूंगा जिसकी वजह से आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खास बात रियल एस्टेट बिजनेस की ये है कि 70 से 80 लाख रुपीस का टर्नओवर बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है एक नॉर्मल फैमिली से। और जितना बड़ा टर्नओवर होता है उतना ही बड़ा हमारा फायदा होता है। हाय, मेरा नाम कुमार अमित है और मुझे रियल एस्टेट में
17 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। और जब मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था तब मैंने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि यहाँ पर कोई भी 360 डिग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। जब मैं इस बिजनेस को बिल्ड करा था ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी। तो उस टाइम पे मैंने अपने टारगेट लिया था कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में कभी भी कामयाबी हुआ तो मैं इस इंडस्ट्री को 1 लाख ट्रेन। सो उसी टारगेट के तहत अभी मैं अपना वेबिनार करने जा रहा हूँ। अगर आप लाइफ में एम्बिशियस हैं, अपनी जॉब के साथ साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, या आप अपना जॉब को छोड़ के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, या आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस ही शुरू करना चाहते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम और ऑनलाइन, तो ये वेबिनार आपके लिए है। अब यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, उस बटन को क्लिक करिए और वेबिनार में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। फिर बताइए, आसपास में कोई पीछे है MFI है तो कोई जल्दी में जाए।
What is the problem? What is the problem with this product? क्या हुआ? मुझे नहीं बाथरूम चाहिए। तेरे पापा का सोएंगे। मैंने क्या किया? तुमको क्या हुआ? क्या हुआ? अरे त्योहार आ रहे हैं यार, मेहमान आएंगे। और ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, हैं? बोलता क्या हुआ? अच्छा, teacher, the price of what is this? If you can mention what we are trying to develop the kind of parameter insurance country. So, how do you think to get some like some learning from the system that okay, this has more, this should be more. So, see, one thing that whatever members of institution you are, you cannot show the things unless and until when they are confident on the product. You cannot do it. So, how is that? Because I heard that you were he wants to get the names of the employees. And are you working with someone or are working with the one people for
आपके घर में पड़ा हुआ है कुछ कपड़े? स्क्रैप मतलब क्या है? कपड़ा कपड़ा आप ले कितने कुछ खबर नहीं मेरे पास इसका कपड़ा बढ़ जाता है क्योंकि मान लीजिए कोई ड्रेस आया, ड्रेस का हाथ ठीक से सेट नहीं होता तो उसका हाथ में काट दो पत्तियां। फिर कोई ड्रेस मान लीजिए था बहुत लंबा काट दी। फिर मनीष का कोई शर्ट उसको लंबा कर छोटा करना होता है हमेशा और मुझे लंबा करना तो जो जब मेरे नी से नीचे जाती है अगर कम है उससे ड्रेस में थोड़ा सा कुछ इधर उधर करके निकल तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रैप कपड़े और उसको इकट्ठा करके कुछ बनाने में भी टाइम लगता है फिर वो पेजेस में ट्रायल एंड एरर में कभी कभी लोग महीने निकाल देते हैं, इनफैक्ट साल में। मेन वही मिस्टेक जो मैंने कुछ 4 साल में करी, मैं आपको 4 घंटे में बता दूंगा ताकि आप उनसे बच सको। और अगर फिर भी आपकी फिल्म नहीं बनी तो 110% मनी बैक गारंटीड। हाय एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव है और इस इंडस्ट्री में बिना किसी कनेक्शन के आई हैव बीन एबल टू जनरेट इंक्वायरीज फ्रॉम मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड्स जैसे कि निविया, मैकडॉनल्ड, श्रीराम फाइनेंस, बिरला ओपस एंड मेनी मोर। देखो, अभी एआई फिल्म्स की मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। Everything.
Pretty good, this one. Look at all this. Oh. Missing this one. This one is, look, very close. So we can remove it. You can apply it properly. Like this. Here. A little bit. And here. Okay, now I have it. Now we can take the piece and move it to embroider it in. And I'm going to show you the thread that I use and how I do borrow embroidery. Look, we can do borrow embroidery with any embroidery thread. Okay, any will work. I particularly like Baldani and the nuances that change color, and this adapts very well to the changes in tonalities of the fabrics, and it looks beautiful. Okay, yeah? But you should know that you can use any. Well, the important thing, namely in burrow embroidery, so that all the pieces join together properly, is to make a simple edging stitch. Okay. You can also include crosses or more decorative stitches, but if you are just starting out with this technique, it is a tiny edging stitch is enough. Okay, the important thing is that we have to go through all the seams from piece to piece. You have to sew stitches here, okay? Okay? And especially through the corners. You have to sew stitches through the corners so that the pieces do not come up, okay? Embroidery directions, however you like. Straight lines, vertically, horizontally. I particularly like it diagonally, okay? Because that way I can hold all the pieces together properly, and I really like doing it diagonally. For example, I am going to show you a design that is a pincushion, and it is in the round, okay? This is because the pattern invited me to do the embroidery in the round, and look, here I made a cross, okay? Worry. But when you work with a rectangle, you do it however you want. In this case, I'm going to do it diagonally. Yes, so we already have the thread in the needle. We leave the... Not how simple the stitches are, if you feel like. To a corner. And I want you to see how I'm holding the corners. Notice. Here, for example, I'm finishing a piece. Okay, and I'm making a stitch to hold that seam. I go on. And I will arrive at another corner. I have very little thread left. And this corner, look, I'm making a small stitch. I'm going to make a small stitch there. I have the thread before the corner, and then I take when the corner is finished. Look. And that's how I hold it. I'm sewing this corner. Okay. Continuing. I'll get here once the fabric is finished. I took it out before it ends and pass it through so that this stitch holds it. Okay. Then it's important. Kar eżu notizali ki shiriali kato asalare ki me regari kare shikara mundo o karte yarena mundial dunemi il. Oh, that. So, Tupergam was telling you about going through the corners. Urosi. As you can see, it also gives it texture, right? All these stitches give it texture, and always be careful. And always be careful not to
cut the thread. Okay. Well, that's it. I hope I've helped you with the burrow technique, Adoik. I hope to give you lots of ideas to use that mini fab. Save the video in case you need to watch it more times. Give it a like and subscribe to my YouTube channel so I can keep making content, and thank you. इतने सारे नुस्खे, कितने भी नुस्खे ट्राई कर लो, ये बेली फैट कम ही नहीं होता। नुस्खे नहीं, लिप्टन ग्रीन टी का साइंस ट्राई करें। इसमें है पावरफुल कैटेकिन्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए और बेली फैट घटाए। लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो। Instead of telling you about how amazing Toonbee really is, why don't I just show you? Let's say we want a bee explaining the law of gravity. And boom, in 1 second, you have everything created. And I'm not talking about short 5-second clips, but about 5-minute long explainer videos that actually educate, entertain, and convert all at once. Every animation in this video was generated with Toonbee, and you're still watching. That proves how engaging cartoon videos truly are. I'm ना आ गया, कितना आया? वाह, तो मेरा क्यों नहीं आया जी? बोर्ड वाला तो आपको भेजा है, बोर्ड वाला तो तुम्हारा एकदम एआई वाला तुमने देख लिया, ये फिर मैंने सब है उसमें एआई का जमाना है तो एआई को करना ठीक है। तुमने देखा है कभी ये करने के लिए तुमने बोर्ड वाला तो नहीं, जो मेंबरशिप काउंटी वाला दी, बोर्ड वाला दिया है सुबह मेंबरशिप कमेटी का तो पहले दिया था वो तो आपने बोला कि सर को भेजो तो हम की सर ने सब काट टूट के उधर भेज दिया और उधर वही बोलना पड़ा तो उसने लिखा हुआ उसका देखा तुम नहीं देखा, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे को नहीं आया था। जब दे रहे थे वहाँ पर दिखा रहे थे क्या मिनट्स की बात करता हूँ, मिनट्स टाइप तो हाँ तो वोट वाले में जाएगा नहीं मिनट्स नहीं था तो मिनट्स नहीं तो मैंने बोला कि मेंबरशिप एप्लीकेशन अप्रूव किए जो डिलीट किए और सब करते हैं वो नहीं आया तो मेंबरशिप कमेटी को नहीं है तो फिर आराम से चेक करें कमेटी को भेजना है फिर अभी तो काम को इसलिए क्या तुम्हारा उसको अलग जगह पर डॉक्यूमेंट करते हैं आगे भी तो ऐसी का तो टाइम अपडेट तो वो हमने उसको अपडेट किया और ये डिसाइड कर दिया डेट के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं। ऊपर रिकॉर्डिंग की जरूरत है मैं आपको Mastering Claude N 2026 is worth over 1 crore dirham and even more. Top companies in Dubai and Abu Dhabi are offering massive packages to professionals who actually know how to leverage AI. And by knowing, I don't mean just chatting with it. I mean mastering all 5 levels. Level 1 is research. Most people stop here, they ask a question, get an answer, and think they're using AI. They aren't. You have leftover strips at home, so let's sew this rug model, because here we reuse, look, several strips of different lengths, okay? In fact, for this special rug, we're going to use, look, very short strips, look, very small, medium-sized leftovers, and then there are some others that are a little longer and then some very large ones, okay?
So stay with me until the end of this video. Here I am already separating the material. Here is my denim base, okay? What did I do here on this base? Well, this here was a seam, right? Because I also used, look, part of the jeans I had, which was a lighter color, another leftover from another pair of jeans. So I sewed it, right? I re-sewn it. Everything turned out really nice. So what did I do here? Extra income. Because with these models here we don't have to calculate anything, right? Sales. Yes, I do sell fabric kits from time to time, okay? They are 100% cotton tricoline kits, okay? But your rug here, look, this model, you can make it with whatever fabric you have there, okay? Preferably flat fabric. What's that, Natalia? Fabric that... I got excited and forgot the end here. The end here. But that's normal. Now we're going to take it and sew it here. There's no shortage of little strips here. In these wider strips, sometimes it's easier, okay? Here, look, on the sides, okay? Subscribe to the channel yet? Not yet? Then subscribe now. It is too narrow, too tight. I think it's more comfortable, easier to make with force. Now, on the shorter sides, the same thing. I'm turning my work, but here, look, the strip right side down, right? But here, look, I'm going to make this little fold, both on this end here and on this one. This is to ensure a very high quality finish, very perfect. Oh. And look how spectacular this rug turned out. Did you like it? So, leave a like, enjoy and subscribe to the channel. There are new videos here every Tuesday and Friday. And join the WhatsApp group. I'm going to leave the link here below in the video description and in the first comment. I'm going to go through it slowly because some people ask me, Natalia, when you show the rug, go through it more slowly, so as not to confuse us. So, okay. I'm going through it here, look, to show it all. It measures 44x. I sincerely hope I have helped you and inspired you with this beautiful, easy and economical idea for sewing rugs. Now the rug I mentioned at the beginning of the video is appearing on the screen. Click on it and watch this video again. I'm sure you'll love it. So, bye-bye and see you in the next video. My favorite time of the day is not sunrise or sunset. It is a time that I spend in the bathroom alone with my phone, scrolling through the depths of the internet. But one day I went there without my phone. I had no clue how to behave or how to act. I started picking up bottles. I started reading the label on the back. I was so bored. I didn't know what to do. सर हम लोग हीट होने के लिए पैसे ला रहे हैं लाखों पैसे ला रहे हैं हीट होने के लिए कहीं जिम जा रहे हैं कहीं योगा सेशन कर रहे हैं कहीं आर्टफुल लिविंग क्या है अंदर था आर्टफुल था ना क्या था आर्ट ऑफ लिविंग कितना मैं
क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. Smash the patriarchy. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. You do not belong to them. You belong to yourself. क्योंकि मैं कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या कोडिंग सिंपल क्लिक और प्रॉम्प्ट 4 घंटे में आपकी पहली फिल्म नहीं बनी, 110% पैसा वापस गारंटी। नाम ग्रुप है और इस इंडस्ट्री में बिना किसी कनेक्शन के आई बीन एबल टू जनरेट इंक्वायरी ब्रांड जैसे कि इंस्टाग्राम बिरला ऊपर एंड और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व जो है वो पूर्ण मानती है? Relationship with your father. नहीं बल्कि You have a relationship with your father. स्टेप बाय स्टेप लाइव बनवाने वाले क्लिक करो नीचे बोली You do not belong to them. You belong to yourself. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. Smash the patriarchy. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को If you have पूर्ण scraps of मानती है? fabric lying around, it's a great idea for you to make a lot of money. You can make 50, 100, several during the and sell them. And sell them. But you do not belong to them. You belong to yourself. But it can be so cool, whatever you have available at home. That's what we're meant to be. 8.5 centimeters, okay. Look. Smash What am I the going to do here? patriarchy. The double layer fabric, right? Which is a strap.
क्या कोई I'm बेटी going पिता to के do the बगैर है following. क्या I'm going to कोई take my strap here. भाई के Okay. बगैर है क्या कोई And I'm going पत्नी to पति के बगैर overlay अपने this अस्तित्व को template on मानती है top. और क्या कोई माँ बेटे के Looks like बगैर you use अपने the अस्तित्व को any पूर्ण that मानती you है have You at have home. relationship with your father. So You have a relationship you with your can do this. You have a Now I'm going relationship to with your come here. husband. You have a relationship with your son. Back here. Put You the do picture not to belong to them. the so You belong I'm to going yourself. Okay. You And it's belong very to simple, nobody. very easy. You very do not fast, belong to very anybody economical, except and yourself. very profitable. The good thing is that you can Smash make the I patriarchy. ask you, leave a like. If क्या you're कोई new here, बेटी पिता के बगैर है क्या कोई बहन भाई के बगैर है क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है relationship with your father. rather not 50 but 60. You have a relationship with your brother. What are we going to do here? You have a relationship The with your winner of husband. the 50K was A relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. To forget you internationally. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. Money. Okay. You can sell it. Smash Make a lot the of money. patriarchy. That's it for extra income and fixed क्या income. कोई बेटी पिता के बगैर है क्या कोई बहन भाई के बगैर है क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती This है is a You have very relationship profitable with your product father. and the tools. And the good thing is, you can relationship with make your them with scraps of fabric, okay? A relationship I'm with gonna your husband. go inside. You have a relationship with your son. This You do not belong to is them. very You simple. belong to yourself. Very You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. With the scrap fabric, Smash the patriarchy. useful, right? In क्या कोई बेटी पिता के बगैर है क्या कोई बहन भाई के बगैर है क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. here I come, I do my. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. You do not belong to them. You belong to yourself. This is like the digital. You belong to nobody. I never liked it. You do not If this belong to contract is anybody designed to you, except yourself. ask that you share it so that it might be able to reach Smash larger the number patriarchy. to live a life. Because life's कोई very बेटी important. पिता के बगैर है क्या Every time कोई you live a बहन like भाई के बगैर YouTube है understands क्या that कोई I'm bringing good पत्नी content पति and के only बगैर अपने doesn't अस्तित्व को recommend मानती this है document और with क्या simple कोई abuse माँ step by step. बेटे के बगैर अपने Make अस्तित्व money. को पूर्ण मानती है More You have a people. relationship with your I father. have them come over here You and have a relationship with your brother. since you did not You have think a that relationship with your husband. that folks left You have a relationship with your son. will be You do not belong to them. You belong to yourself. all selling. You belong to nobody. You do not This sounds belong like to tactics, anybody okay? except yourself. To sell and make money. Smash the To patriarchy. make money, do this. क्या Okay. कोई बेटी Share this पिता video के with that बगैर है friend क्या कोई बहन भाई के बगैर है struggling क्या in कोई this पत्नी respect. पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण Since I मानती don't है think You have a relationship with your father. this way instead. You have a relationship with Now your what am I brother. going to do? Pay close attention here. You have a Okay. relationship Look, I with your husband. folded my fabric You here have a relationship with your son. with all the But fabric you that do not belong to them. I You belong to yourself. right here. You belong to nobody. Just so you can You do not belong to anybody except yourself. once more messy. Because it was Smash right here. the patriarchy. Exactly like क्या this, कोई right? बेटी पिता के बगैर है क्या And I कोई fold. बहन भाई And I के make बगैर another है watch क्या here. कोई पत्नी पति I के make बगैर another one on अपने the other अस्तित्व को मानती है और You see क्या one कोई it's माँ super simple, बेटे के easy. बगैर अपने अस्तित्व Quick को enough. पूर्ण मानती है And very actionable. Very practical. There. You see what I made mine now? I'm gonna come here. Be careful not to touch the other side. Okay. Look, you have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. Like this. You belong to nobody. You do not belong to anybody Just like except this. yourself. See? It'll stay like this, right? Smash Here, the patriarchy. cut the real big part.
Just a tiny bit. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have relationship with your father. You have a relationship with your brother. Easy, quick. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. You can see You it. belong to I nobody. apologize. Girls are saying You do not belong to anybody. Accept yourself. For those who have been following me for a while, Smash that I moved the patriarchy. change the position of क्या my कोई fellow बेटी पिता camera. के बगैर as I है? used to क्या record कोई in बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी So पति के sometimes बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. I didn't even cut this. You have a relationship with your husband. Ideally, You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. A lot of extension force, but You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. So it remains very well. Yeah, that was Smash patriarchy. बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? Relationship with your If you're one of those people who has a bag full of tiny fabric scraps and doesn't know what to do with them, check out this idea. You have a relationship with your son. This but lady you takes a do large not piece of belong fabric. to them. You belong to yourself. It's about the size of a You small belong bed. to nobody. And then she spreads all these You small do not pieces of belong fabric to over. anybody except yourself. Smash the patriarchy. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? Then what she does is roll them up and then puts them inside like a cover. And she flattens them out, sort of evens them out. And then, so that this doesn't become a mess when it's brought to the movie, what she does is create equidistant thread a tapestry needle to create that texture and to secure all its pieces. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. We believe in people and their potential. Smash We believe in the collective patriarchy. make positive change. We believe in coaching. पिता के बगैर For है? 30 years, we have remained committed to nurturing and advancing the coaching profession. पति के बगैर अपने अस्तित्व While को honoring our मानती है? legacy, और we क्या कोई acknowledge माँ today's बेटे increasing के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण In a मानती time है? when guidance is Relationship with your together, father. we, as You have a life-changing relationship visionaries, with your brother. embrace the future. With You the have a ambition of relationship perfecting the with your future of husband. coaching, we You have aim a to make it the relationship with core your of son, empowerment for but all you do generations not belong to by them. creating new You coaching belong to programs, yourself. and embracing our You values, belong to nobody. forward-thinking, You do not excellence, belong and to creativity. anybody For except individuals, yourself. 2.5 millimeter. Smash the patriarchy. And because I haven't worked on this so long, I क्या was very कोई pleased. बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your father. Spaces in. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son, but you do not belong to them. You belong to yourself. Very tall, so You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. Smash the patriarchy. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? Relationship with your father. Before we actually get You have a started, I wanted relationship to with talk to your you brother. about the Kawandi quilt You have a that I relationship with made. your husband. Mine is a table runner. Relationship with your son. And I think You if you want to make one, you've never done it before, Son, with something similar. you belong to nobody. Mine is about 38 inches long and it's about 8 inches wide. Your son. Mine does not have any batting in it. Smash It the is 2 layers patriarchy. only. It is the backing
and it is the scraps on the front. So it's a great way to use up your scraps. Let's talk about supplies. My favorite part of any new project is gathering supplies. Now, we're going to talk about the fabric in a minute. So you're going to need a spray bottle with some water or some spray starch. You're going to need either a rotary cutter and a scissor and or both, actually. You're going to need, I'm so sorry, an iron. I use this little portable here and I love it so much. I used pearl cotton for my stitching, size 8. You don't have to use pearl cotton. If you don't have any, you can use embroidery floss, but you should be using at least 3 to 4 strands in your needle, which leads me to straight pin. A lot of people do not use pins when they're making their Kawande quilts. I do, and you'll see why later. A ruler. And this is an ironing mat. I find it very handy to have like a little mat. And the iron is right there, and I'm sitting at my table. And I'm doing everything else. You're also going to need some kind of a small needle and a longer, thinner piece is a good option. Let me go back to the pins. I prefer using straight pins without a head for this project. You're going to need a back piece for your back. You've already obviously determined how big your piece is going to be, so you need a big piece of fabric. I would not recommend using the fabric for your first project. Get one piece of fabric. I'm going to be making in this lesson. Here's my fabric. And you will notice, maybe, that it is laying flat. Okay? It's not like a fluffy pile on my table. And that's because I ironed it. The reason for ironing, and I know a lot of you do not like to iron, but the reason to iron is you're starting out with something flat. You're not fighting. And it will be much easier as you're working on this project. This is not a typical slow stitch project. There's a few nuances about working one of these. Let's see, how can I say it? Ironing your fabric will make it go easy. I would iron your scraps and also try not to use a really tiny piece. This Kawande quilt technique requires, in my opinion, if you're a beginner, it requires a little bit of a wider or bigger piece. So this piece is about 2 inches wide. I haven't cut it this way yet. This is perfect. So don't go any smaller than 2 inches. You have a relationship with your son. The reason for that is when we go to wear the fabric for the quilt, we're going to fold this over except yourself at least a half an inch. Don't be stingy, and I know it. We're folding over both sides at half an inch. You see what you're left with? It's just a skinny little piece. So that's why I'm telling you to really use these teeny tiny pieces of fabric. You have a relationship with your father. में सक्सेस का मतलब था ज्यादा सैक्रिफाइस जो मास्टर बिजनेस सक्सेस का मतलब है सही सिस्टम सही ज्यादा You अभी भी वही टीम पर चलाना रोज की अनगिनत मीटिंग सब कुछ खुद ही करना अगर ये हाल है तो आपको एक नहीं 2 आपको चाहिए सिस्टम्स सही You must iron your back. Iron it so it's nice and flat. And after you've ironed it flat, you have to fold over the edges, all 4 sides. So you're going to fold it over at least a half an inch. You can go up to 3/4 of an inch, but at least a half an inch. Fold it over, use some spray starch or some water. Press it so it's on to stay. You're going to press this, then this side, then you're going to press this side. Smash the patriarchy! So nothing fancy in the corners.
भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? Relationship with your Fact, You have a relationship with your mother. use the gold. You have a relationship with your husband. I You have have a finished relationship with your my stitching but all the you way do around. not belong to Now, them. you're ready to belong do the to next yourself. layer. But if you wanted to You use belong to that, nobody. if you wanted You to do use a not piece belong of to gold anybody or except yourself. any around and Smash around because the that's how you roll. patriarchy. Whereas regular quilts, क्या you would कोई go back and बेटी forth. पिता We're के not doing बगैर that. है? We're going to do क्या it in the कोई बहन भाई table. के बगैर है? Or क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई Please माँ let me बेटे के know, बगैर tag अपने me on अस्तित्व को Instagram or- पूर्ण मानती है? Relationship with your partner. a half You have a relationship with your one of these handy. You can You have a relationship with your husband. this. You have a is relationship wonderful. with your son. But You you do not also belong a to them. thimble. You If belong to you're yourself. using a thimble, it will be helpful You to belong to push the nobody. needle through. You do not belong to anybody this is except yourself. Smash the patriarchy. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your mother. Kind of like You have a relationship with your kind of like You have a relationship with your husband. like start with You have a something relationship like my with your grandpa and You do not belong to little world You and, belong you to know, yourself. fancy, which is the whole You thing belong about to nobody. stitching. You do So not I belong to would give anybody time except to yourself. that, to the basics and just do a little bit of Smash stitching. the patriarchy. And I thought I'll come on and show you what I'm going to be doing. कोई So I've बेटी got it all पिता my के bits and बगैर है? pieces on here. क्या I'm just कोई going to move बहन out of the way. भाई के It's बगैर really है? interesting. क्या कोई I just thought पत्नी I'd show पति you, के बगैर अपने I've got my अस्तित्व को scraps, these मानती है? kind of these और scraps. क्या कोई We've got माँ here, बेटे के we've got बगैर अपने French अस्तित्व को vintage पूर्ण linens, मानती है? Relationship with your partner. fabric. So I was with a little bit You have a relationship with your husband. fabric that I've You have a relationship with your son. You do not belong to them. You belong to yourself. scraps that I use. You belong to nobody. And You do not belong to anybody except yourself. It was a real mess. I thought I'll tidy it up. Smash So I kind the of patriarchy. and everything, just sorted it all out. So that's kind of like neat and tidy. You know, बेटी so I've just पिता done के this बगैर one है? here. I क्या haven't कोई done, as you can see, this is भाई के बगैर है? क्या कोई kitchen as well. So पत्नी I've got two पति के बगैर kitchens अपने like that. अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your father. I've put in You have a relationship with your laundry label. These are kind of like my You have a relationship with your son. But you do not belong to them. for digging You around. belong to yourself. Vintage. You belong to nobody. You know, like when You do not belong to anybody except yourself. not called slabs of soap, but you can take your soap. Smash the patriarchy. They were used for that, but for क्या I saw कोई this बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? I'm tidying this up very long, so they're kind of like waiting to be tidied up back up. You relationship with your These here are but always you do out. not These belong are to them. You belong to yourself. threads. I usually You get belong these, to nobody. about You do not belong to anybody except yourself. charity shops. You can get them as well. Smash the patriarchy. Or it's always handy to have in the different creams and beiges. I've got those. क्या I've just कोई picked out a couple of भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your husband. snippets of scrappy You bits have a and relationship stuff with your like that. And then You have a relationship with your husband. political. You have a relationship with your son. You do not belong to It's them. like You belong to yourself. even with linen, I think it was used. You belong to nobody. You do not belong to anybody This kind of except yourself. for backing, or I've got some. This is a Smash tablecloth. patriarchy. Tablecloth. This is
kitchen, not क्या kitchen. कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? Relationship with your father. Two vintage linen there. And the relationship with your father. Financially, that is us. Relationship with your husband. There you go. Relationship with your son. You do not belong to them. You belong to yourself. Nice size to start with. You belong to nobody. Not too big, not too small. You do not belong to anybody. Except yourself. So don't forget, you've got your needle. So let me grab a needle. Smash the patriarchy. Just one needle. Got क्या fifth कोई is बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई माँ बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. That's from a project. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. This is just mostly needle paste that I use. Smash the patriarchy. क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या ठीक है ठीक है कोई बात नहीं